हैं जो एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि ट्रेसेबिलिटी के साथ इनबिल्ट है। तो मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर साहिल को कि वो अपनी प्रेजेंटेशन करें। Okay. Thanks, sir. First of all, thank you for this rare opportunity in which we are able to participate. And just as mentioned, I think we can move into the position. So we are here basically to provide a herbal value chain. So right now, okay, so herbs have been used for centuries as medicinal purposes or as a culinary ingredients in a variety of ways. And in today's world, since there is general adulteration overall, so the similar case with herbal value chain, we have concerns about food safety, quality control, and sustainability. And for what the major issue being that tracking herbs from the source to the end customer and accountability of the supply chain. Okay, so we are facing a number of challenges here in the herbal industry, starting from quality control. So the quality here as such is not such standardized, and there are no such standards or measures by which a quality will be traced. And secondly, being the adulteration, we, as you know, we are like whenever one purchases a segment, particular segment, there are a number of fillers or low value products that are added to the total value chain, and as overall we have a much lower quality. Third being the lack of transparency. Right now, that's a major concern in the herb industry. We don't know, we can't trace a source to its herb to its source, right? We don't know whether it is real or whether it was cultivated or it was illegally procured or legally procured. And like I mentioned, we have limited regulation, standardization, and the complexity of supply chain. So basically, a herb which you're actually buying is not just the one which is from the source, but from a number of vendors or traders. And as such, you can't trace it. And for the supply chain too, this is very, very complex, into multiple sources in between. So what's the solution of all this? So the main solution of all this is to ensure that make a platform that is much reliable and transparent and tracks your whole journey from right from the cultivation to the consumers. So what does it do and what does it adds? So it adds enhancing customers' confidence so that you know what you are actually buying with a quality product. And next being the ensuring safety and the quality control. You know the thing you are buying because everything is verified there. We have quality there, we have traceability there. And next being the facilitating supply chain efficiency, obviously that you are now able to trace from where the herbs are and where it is going, and what all activities that take like to quick play in between, you can trace that. And again, promoting sustainability and ethical sourcing, because once you have established a practice in which they know they need to add how they actually procure it, and need to add the quality report, it will actually promote people to actually find a legal way to actually cultivate the whole herbs and follow proper government patterns. And this will ensure building a trust and loyalty. So we have introduced a Jadi Booty Bazaar, which is a herbal connect for quality and traceability. So this is our team which has actually participated in establishing the platform in coordination with the great help from Dr. Ranchana. So what is the Jadi Booty Bazaar? So Jadi Booty Bazaar is basically a platform for herbs in which it enables online bidding. So you can log in as a buyer or a seller, and like a seller, he will actually perform and make an auction, create an auction, and the buyer can actually bid on the auction lot. And solutioning, why it is the main thing? Because solutioning involves quality assurance will be ensured using the LabX technology we have, and secondly, ensuring traceability using Hedera blockchain. So why have that from? First, the end-to-end traceability. So right from the seed or the field from where you are actually growing the herbs to your fork in your plate, you can actually see what all the journey of your herbs, from where it is sourced, from where it was graded, where it is qualitized into like say grade A, grade C, anything. And secondly, you will know have the quality. All lots there would have a quality report attached to it, so you know what you're buying. Thirdly, the blockchain enabled. Blockchain does, so what's the blockchain technology? Basically, a blockchain technology would let you, like it won't allow anything to change the record which is already been recorded. So for a blockchain technology here, the result you're getting would remain unadulterated. No one's going to change it. They can't change it. They can't hack the way through it.
And the secondly being, it's a win-win deal. How come? Because sellers know that what they are selling is a quality product, it's a legally procured product, and they will be able to fetch high prices. And similarly for the buyer, which is actually buying the product, he knows he's getting a quality thing for the money he's paying. So it's a win-win deal for both the ends. Okay, so how we are ensuring end-to-end traceability? First, all the farmer data, as you can see there, is actually being captured, and you can see from which farmers they are collecting, from which area are we collecting, and what we are collecting. Then we can actually take account for all the collections into the data too, so where it is actually collected and then sourced. We can even include the packaging and logistics in it, so that you know where the product you are buying it is sourced out. And the next being the processing plant, we can actually process the processing information to the QR code itself. So basically all you need to do is you got to have a source, a QR code will be provided. You can scan the QR code with your phone and actually you will be able to see all its quality code and all its traceability code. Okay, so Jaddi Booty Bazaar, like I mentioned, is an online forward auction platform that basically connects suppliers and buyers. And simply suppliers can list the product they want to sell, and simply a buyer can actually bid on it. And the highest bidder, like for if I'm a seller, I will be able to see the which one who wants to buy the bid, and I can allot it to the one in which I'm fetching the highest prices. And this will ensure that all I'm getting the high prices while ensuring the transparent way for both the suppliers and managers. So LabX is a platform in which we have 100 plus NAPL accredited labs. So all the quality that the lot in here could be requested on form premises, and you will be able to attach that quality report in the platform itself when you're creating an auction. Hedera is basically a blockchain technology. We have partnered up with the Swiss government to have a collaborative project on Hedera. This will ensure traceability. So Trust Plus is a AGNext and Hedera collaboration in which the food trust block is basically powered by blockchain. The objective being, like I said, end-to-end traceability to improve the overall efficiency of the herbal value chain and also the whole agri value chain. Key highlights of the Trust Plus being the real-time mentoring and visibility, traceability and performance, irreplaceable tempered resolution transactions, and paperless ecosystem. Like I said, we can actually, blockchain chain itself is a technology in which you can put multiple level data. So from actually you can see from the fork to the like product, you can actually see, you can trace each and everything depending on which data you want to capture. You can capture if you want to see like capture what kind of herbs we are sowing, where it was graded, and everything. Through the whole entire journey, you can put in any information you want that you find that is actually relevant. And we can actually put that on blockchain, so you'll be able to trace everything. It's a single thing. So for the traceability, you have origin information, auction information, movement information, everything would be ensured to make it much more traceable. Yeah, it's the same learning. So for the personas and flows, as you can see, we have basically for the platform, we have personas of an admin, which will be one which will be addressing all the transactions, and that will be verified by the RCFC team and the collaboration with the AGNext team. And you can liaise as labs to buyers, sellers, our operators. Any of these personas are customizable and as per the needs. For the flows, I'm going to show you some of the flows of the platform. So this is basically a supplier registration thing. And all you need to do here is you need to log in via your mobile number. You will get an OTP and you will be able to register yourself as a buyer or a seller, and you will start with selling and listing your product. So this is the homepage. Just a minute, I'm back. Yeah. So this is the homepage you will actually see when you actually log in. So as you can see, all the auctions that are live auctions that right now, and what are the prices going on, which is being the highest bid right now. And if you want to bid on it, you can. So this is a detailed overview in which you can see what is the type of herb we are selling, the description. You can even see the method of cultivation. You can see if it's a widely collected or it is a cultivated one. Because we are actually capturing whether it is legally procured or illegally procured and what the certifications required. Everything is available at your end. You will, as you can see, there is an traceability and quality report too that is attached to it. So if you want to bid on it, you can actually see the report if the product you are buying has quality and what are its sources. So you can trace everything before you want to bid for the product.
Okay, so this is the traceability window. As you can see, approximate date of sowing, grading, and everything. So this is the traceability part where you can, the user will be able to see a whole of what are we capturing the data, what are its sources, what are its origins, and all the transportation and logistics too. Okay, so this is the dashboard. So this is simply a virtual representation of the data we are collecting. So basically, you can see, you can be able to see what are the total number of auctions he participated in, or what are the total number of auctions he is actually made live. And this is simply a dashboard in which we are able to see all the virtual representation of data that of the activities he had earlier done. This is the same tab. This is a simply live auction file page. And this is a simple dashboard, as you can see, like I said, virtual representation. Okay, so this is a rate auction page. As you can see, we are capturing the entire data, what are it, like quality, what are the served herbs origins, what is the type of variety we are selling, if it's an RET category or not. In case it's an RET product, then you need to actually add a legal LPC, legal procurement certificate for the same. That everything will be captured. You can see the even the method, whether it's widely collected or cultivated, and appropriate certifications needed to be uploaded depending on the method you are collecting it with. Okay. So this is the progress. This is update. Okay, I need to update this. But basically, we are actually working on it. And last time, as I showed, displayed with Dr. So we have actually done the personas of buyer and seller, and we are working on the admin persona right now. So that once it is ready, our teams are working on it, and once it's ready, we'll be able to showcase it. For the future developments, like I said, we are planning to integrate payment portals on demands. Right now, we're keeping it offline, depending on their requests. In future, we can actually integrate Razorpay, Paytm, UPI, everything could be implemented on the same. We can integrate logistics and tracking in this too, adding third-party services to the platform too. And then third being the multiple profiles for a single user. Right now, for a single mobile number, we are actually creating a single persona, or whether it's a buyer or a seller. In coming future, we can actually enable two personas on a single phone number as well. Okay, so concluding, basically the implementation of a robust public traceability platform is paramount, given the level of adulteration that is being going on these days. And also this public ensures accountability and adds customer requirement and customers trust, and enable efficient management of global supply chain. And by basically leveraging tracking technologies, data capture, we'll be able to promote a sustainable farming, like Dr. mentioned earlier. Because you will need to add a whole lot of certificates that should be legally licensed, and this will promote healthy activity and enable and improvise the entire whole future. Okay, that's it, I guess. Thank you. Thank you, Sahil. अब मैं बताना चाहूँगा मिस्टर रियाज मोहम्मद जी को, कि हॉलिस्टिक हिमालय के जो FPC है उसके CEO भी हैं, और इन्होंने जो काम शुरू किया था वो हर्बल वाइन्स पे शुरू किया था, और अब इसको साथ करते हुए अब ये पिंचेस पे काम कर रहे हैं, इसेंशियल ऑयल्स पे काम कर रहे हैं, मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इनके सामने रखा भी है टेबल पे। इन्होंने गुच्ची के सैंपल रखे हैं, चोरा के सैंपल रखे हैं, कुछ कैप्सूल फॉर्मेशन बनाई है, तो ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मिस्टर रियाज। Organizing such events, and I have been part of many such events in many places in northern India. So first of all, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये products क्या हैं और ये हमने products किस तरह से बनाए हैं। Let me start with like Dr. Sourabh said कि herbal wine बनाने से अब हम nano suspensions और tinctures of medicines बना रहे हैं, कुछ vacuum tag, कुछ अपने products को लेकर के आ रहे हैं मार्केट में, जिनकी शेल्फ लाइफ 3 साल तक है। आमतौर पर कुछ जो है वो 1 साल 2 साल तक, 1 साल 1.5 साल तक, लेकिन बैक में ये 2-3 साल तक। नाउ ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं कहाँ पे था, यहाँ पे कैसे पहुँचा, और ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू चेन, ट्रेसेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे आइडियाज़ कैसे इकट्ठा हुए। सो ये सारा
स्टार्ट हुआ जब मैं 2018 में, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा था और इंजीनियरिंग का मुझे ऐसा आया कि गवर्नमेंट जॉब जम नहीं रही है, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ ज़्यादा चाहिए। एक यूथ क्या मांगता है, कुछ ज़्यादा मांगता है, भूख भी ज़्यादा होती है, काम भी ज़्यादा कर सकते हैं, एनर्जी भी ज़्यादा होती है। सो आई मेट अ सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर सलारिया जी, एंड डॉक्टर सलारिया थॉट कि ये लड़का कहाँ पे जाके एडजस्ट होगा। ही ब्रॉट मी टू जोगिंद्रनगर एंड देयर आई मेट डॉक्टर अरुण। सो व्हाट हैपेंड कि आई हैव बीन वर्किंग विद दिस मेडिसिनल प्लांट्स। अब बनाया क्या जाए, समझ तो है, कुछ तो पढ़ लिया, कुछ सीख लिया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बाजार में कैसे लेके आना है, उसको सही से कैसे करना है। क्योंकि जड़ी बूटियाँ तो सब बेच रहे हैं, इंश्योरेंस भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बैकग्राउंड में क्या है कि जिसकी वजह से जो तुम्हें ड्राइव कर रहा है आगे लेके जाने। जब चंबा मेडिकल कॉलेज में थे, चंबा मेडिकल कॉलेज में हमने 55,000 पेशेंट्स को सीखे। उसको फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलो, मेरी ड्यूटी जो थी वो आरटीआई वार्ड में, आरटीआई वार्ड होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैकिंग या यूनिट ट्रैकिंग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो वहाँ पे हमने 55,000 पेशेंट्स को स्टडी किया, तो उसमें से 99% जो थी वो महिलाएं थी। चंबा की पॉपुलेशन है 5,55,000, उसमें से 10% पॉपुलेशन जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँची। इसका मतलब कि गाँव में क्या हालत है किसी को नहीं। जॉब छोड़ने के बाद गांव में गए, गांव में देखा कि क्या सिचुएशन है। देयर आर मोर देन 90% वुमेन हु आर इन्फेक्टेड विद सर्टेन काइंड ऑफ एसटीआईज जो भी है। रीजन क्या है, वजह क्या है, उसको ढूंढने की कोशिश की। जब ढूंढने की कोशिश की तो हमने देखा कि हमारे गांव की औरतें जो है ना, जो अपने अंडर गारमेंट्स, आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये कहीं और जा रही है, हर्बल के ही आसपास आएगी, तो वो अपने अंडर गारमेंट जो है ना वो धूप में नहीं सुखा पाते। जो मानसिक संकेत होता है कि उसकी वजह से फंगस आ जाता है, फंगल आ गया, फंगल इन्फेक्शन आ गया। एक बार फंगल इन्फेक्शन बन गया तो वो लाइफ टाइम। गांव में जाकर के पूछ लो कि जी आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, दे से ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्यों बताया तो कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, वो कह देते हैं ये। तो इस तरह की बातें कोई करता नहीं, वो लोग कह देते हैं, कुछ भी कहते हैं। गाँव की बात, इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट द सेक्स। लेकिन इसको मेडिसिनल प्लांट्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उस बात की अंडरस्टैंडिंग को लाना है, तो ये बहुत लंबी जर्नी थी। ये सभी जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने वाला पार्ट है, इन सब चीज़ों को किस तरह से कनेक्ट करना है। सो लेकिन सब औरतों को ये प्रॉब्लम जरूर थी कि उनको पीठ की दर्द है, टांगों की दर्द है, तो इस चीज़ को हमने कनेक्ट किया कि हाँ इसको कुछ तो जो है वो एक नए प्लेटफॉर्म पे ला करके किसी तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। Then we started working on this herbal wines. आसो एंड आरिश को पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन उसको मॉडर्न कंसेप्ट में कैसे लाया जाए, नैनो सस्पेंशन कैसे बनाए जाए, पिक्चर्स कैसे बनाए जाए कि एक ही ड्रॉप डाल करके उसके काम करें। सो हमने गांव में जाकर के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से सिर्फ एक ही चीज़ नहीं काम करेगी। कि अगर आपको कोई बीमारी है, पेट की बीमारी है, तो एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक लेने से तो ठीक नहीं हो जाएगी। एंटीबायोटिक पैरासीटामोल ले लो, पैरासीटामोल का एग्जाम्पल देता हूँ, उस पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि इंजूरियस टू लिवर। लेकिन जब हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं तो मेडिसिनल प्लांट से क्या है, आयुर्वेदा कनेक्ट होता है। एंड आयुर्वेदा हमेशा ही सिस्टम और सराउंडिंग की बात करेगा, आपकी बॉडी की भी बात करेगा और बॉडी और इन्वायरमेंट की भी बात करेगा। नाउ इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि आयुर्वेदा में एक श्लोक है जिसका मैं आपको सलाह बताता हूँ। उसमें कहते हैं कि हर एक बीमारी का जो इलाज है वो आपके 10 कोष में ही मिलता है। 10 कोष में मिल जाएगा, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ से जड़ी बूटियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन खुद नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। ये जैसे गुच्छी है, गुच्छी 10,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये किलो तक बिकती है, लेकिन गाँव वाले इसको माला पिरो करके रखेंगे, उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि उसको बेचना है, उसको पैसा चाहिए। अब ये बात को समझना है कि सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को इकट्ठा कर करके होलिस्टिक हेल्थ को कैसे अचीव किया, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना था। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को कनेक्ट करना था, पैकिंग कैसे करनी है उसको कनेक्ट करना था, इस पहले प्रोडक्ट को बनाना कैसे है उसको कनेक्ट करना था, गांव के लोगों को इकट्ठा करना है। अब गांव के लोग के लिए कि वो अपने घर का रास्ता भी बना रहे हैं, तो घर के सामने वाले रास्ते में भी चिंतित हो रही थी, उसमें से थोड़े पैसे बचा लेंगे कि रात को सॉरी टू से बट ये हमारा समाज है ही ऐसा कि रात को एक अदिये के लिए या कौवे के लिए वो अपने घर का रास्ता 10 साल के लिए खराब, ये विडम्बना है हमारे समाज की। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना था, सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को कनेक्ट करना। तो रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर वहीं से प्रोटीन ले लेते हैं। जोगिंद्रनगर पहुँचे, जोगिंद्रनगर में पहुँच करके देखा कि यार करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन
किया कैसे जाए, धीरे धीरे हमने जो है बाकी चीज़ों को भी समझना शुरू किया कि एक चीज़ से काम नहीं किया जा सकता, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, जज्बा लाना पड़ेगा, ऐसे ही पागल बनना पड़ेगा। कहा लोगों ने पागल भी कहा कि ये क्या कर रहे हैं, जड़ी बूटियाँ उगाड़ रहे हैं गाँव में जाकर के, इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा एजेंडा रहना चाहिए जो लोगों को सेंसिटाइज करे, लोगों को थोड़ी देर के लिए झंझोड़ दे, या आपके घर के काम के लिए झंझोड़ दे, अपनी माँ बहन के कपड़े नहीं दे। These are very sensitive topics and very sensitive things which cannot be. So we started working on this. बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट किया, बहुत सारी चीज़ों की जो डवटेलिंग वाला पार्ट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को कनेक्ट किया। रिसेंटली हमने जो है एग्रीकल्चर नेक्स्ट AGNext के साथ जो है इनके साथ कोलैबोरेशन में जो है मॉडल पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कि ब्लॉकचेन को किस तरह से इनेबल किया जाए, कुछ कहाँ से निकल रही है, कौन निकाल रहा है, किसने उसको पैक किया है, कहाँ पे जाकर के बिकेगी, उसके बीच में जितनी भी प्रोसेसेस हुई, बस एक QR कोड पे स्कैन करना है, आपको सबकी फोटो मिल जाएगी, इसने उगाड़ी थी, इसने पैक किया था। तो इस तरह से जो है ये सारे मॉडल को जो है डेवलप किया। तो इसीलिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होलिस्टिक हिमालय दे दिया, क्योंकि हम जितना भी काम करते थे वो हिमालय में। तो ये प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे इस तरह से डेवलप किया, और हमारे प्रोडक्ट्स कुछ तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट जो है हमारा 800 का है, एक प्रोडक्ट हमारा 5000 का है, बस इन्हीं में है सब कुछ। सो ये वाला पार्ट जो है इसकी पूरी ग्रूमिंग जो है हमें नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का जो RCFC से है वहाँ से। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल अगेन टू डॉक्टर अरुण चंदन कि यू हैव गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अपॉन आवर पैशन, जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं। यूथ का तो पहले ऐसा नहीं रहता ना कि जज्बा नहीं रहता, यूथ को तो पहले ऐसे कि पैसे कमाने, पैसे कहाँ से आएंगे, तो जॉब तो छोड़ दी, जॉब छोड़ने के बाद कुछ काम भी करना था, वो जुनून में एक बार में छूट गई जॉब। 3 महीने बाद 4 महीने बाद समझ में आया कि भाई साहब मुझे बदल ना हो तो बाद कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रेसेबिलिटी में पूरा जो ट्रेसेबिलिटी की बात जो अभी साहिल जी ने बताया कहाँ से निकलता है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, तो अब हमें अगर कोई काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ काम करना है, तो अगर मैं पूरा जहाँ से निकल रही है और इस स्टेज तक लाने में बहुत सारे स्टेप्स, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना है, उसको साफ करवाना है, प्राइमरी प्रोसेसिंग करवानी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना है, क्या पता इस साल मेरी ये बने ही ना, मशीन्स ना आए, वैक्यूम पैकिंग वाला ना आए, फिर ये सीलिंग वाला ना आए, ये मॉडल कहाँ से आएगी, तो इसमें बहुत सारे बीच में स्टेप्स। अब इन स्टेप्स को अगर मैं लास्ट तक करूँगा, अगर बीइंग एंटरप्रेन्योर अगर लास्ट तक करूँगा तो फिर तो कर लिया काम, फिर तो मैं 5 6 7 8 साल पैसों का वेट करता रहूँगा और आता रहेगा। तो हमने क्या सोचा कि जिस स्टेप में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहीं से शुरू करें, यहाँ से जड़ी बूटियाँ खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग कर रही है, बीच में अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग करके कोई दुकानदार आके कह रहा है उसको बेच दिया, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं फ्रूट्स बेच दिया। अब कुछ और प्रोडक्ट्स हैं हमारे अभी अराउंड हमने जोगिंदर नगर में रह करके मोर देन 300 फॉर्मुलेशंस को ईजाद किया, जिसमें फूड है, कॉस्मेटिक है, मेडिसिन हैं, इस तरह के टिंचर्स हैं, हर्बल वाइन्स हैं। हर्बल वाइन्स में तो एक बहुत बड़ी रेंज रहती है, आप कहेंगे मेरे को लीवर खराब है तो आपके लीवर के लिए, आप कहेंगे किडनी की प्रॉब्लम है उसके लिए पाएंगे, हार्ट के लिए पाएंगे, आपके स्लीप एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए पाएंगे। सो इस तरह से जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप के जो आइडिया को जो है वहाँ पे डेवलप किया। सो ये सारा का सारा पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द इंटेंशन ऑफ हीलिंग, and that I learned from Dr. Arun Chandan ji. He is a wonderful physician, and वो अपनी इस प्रैक्टिस को छोड़कर कि rather than healing one individual, he is healing the Himalaya, he is healing the northern India, he is selflessly devoted into uplifting each and every farmer. इस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया और हम इस तरह से वो काम करें और हम उनसे सीख करके कि हाँ ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट तरीकों से जो है मार्केट में लाए जा सकते। सो वो उस तरह से हमने डेवलप किया क्योंकि इंटेंशन तो नहीं थी कि अगर ठीक करना है तो ठीक तो करना है, फिर वो हर एक लेवल पे ठीक करना है, चाहे आप एग्रीकल्चर से ठीक कर लो, हॉर्टिकल्चर से ठीक कर लो, लास्ट में आपको एंटरप्रेन्योर बनाना है और उस पूरे वैल्यू चेन को समझना। सो हमने अपना एजेंडा ही वहीं से लेके कि लेट्स हील द वर्ल्ड, हमारा मोटो ही लेट्स हील द वर्ल्ड। सो with all the blessings of God Dhanvantri, we are following all the paths of God Dhanvantri. So system और surrounding की बात कर रहे हैं हमेशा से ही कि सिर्फ अपने घर का कूड़ा घर के बाहर फेंक देने से घर साफ नहीं होता, हमें समाज को भी साफ करना, सबको मिल करके लेकर के साथ में चलेंगे,
साथ में काम करें। एंड दे से कि लव इज इन द एयर, बट वी से कि हीलिंग इज इन द एयर। दैट्स व्हाई योगा और आयुर्वेदा सप्लाई विश्वास पे है, अपने काम करो, अब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। धीरे धीरे आप सब कुछ करना सीखोगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही बॉडी की सभी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है वो। थैंक यू सो मच। और ये वर्कशॉप सेक्शन था, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट पार्ट है आपको बताना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि इन सभी चीज़ों में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें 5वीं में सीखी हैं, कुछ 10वीं में सीखी हैं, कुछ 6वीं में सीखी हैं, कुछ कब सीखी हैं, कुछ कब सीखी हैं। एक टाइम पे एक चीज़ तो करने के लिए टाइम तो लगता है, क्योंकि पहली क्लास में गिनती सीखने के लिए 1 से 100 तक गिनती सीखने के लिए 1 साल लगता है। तो उसी तरह से इन चीज़ों को भी सीखने के लिए, हालांकि ये कैप्सूल ही बनाना सिर्फ ऐसे 2 कैप्सूल के बीच में दवाई भर करके ऐसे बेचने के लिए रख देना, लेकिन 2020 से लेकर के मेरा कैप्सूल जो है अभी जाके 2023 में अभी पिछले में। सो इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे जो है हम सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, अपनी वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करते हैं और सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। वी हील द वर्ल्ड। सो दिस इज वर्कशॉप सेशन। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, वी आर ओपन। टेक्नोलॉजी में रहने से ऑडियंस ने बड़े ध्यान से सुना है, करीब तो आप पूछ सकते हैं। इनिशियली तो हमें बहुत टफ लगा, लेकिन मेरे इंक्यूबेशन सेंटर में, क्योंकि मैंने हर्बल वाली में काम स्टार्ट किया था, मैं सीएम स्टार्टअप का योजना का ही पार्ट, तो मेरे मेंटर और मेरे इंस्टीट्यूशन है RCS, इट्स नॉट फ्रॉम RCS बट इट इज फ्रॉम RCS। मेरे इंस्टीट्यूशन ने मेरी इन चीज़ों को बहुत ईजी किया। तो पहले जो मुझे रॉकेट साइंस लगता था कि आसफ क्या होता है, RH क्या होता है, जंतु पहचान आयुर्वेदिक वाइन से, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है बहुत ईजी। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी पार्ट पे हैंड होल्डिंग हो, ये वाले पार्ट में कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है थ्रू योर माइंड। यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ। वही बात है कि पहली में गिनती सीखने के लिए 100 तक गिनती सीखने के लिए 1 साल लग जाता है। सो कोई भी जो आपको स्टार्टअप जर्नी है उसको नेक्स्ट फेज में लाने के लिए समय